Hello students, are you there? Today we will be discussing about oral pathology, white lesions. In the previous lectures, we have discussed about important topics like leukoplakia, lichen planus. Today's topic is about leukoedema and rest of the disorders. So if you are having any doubt in the previous topics, we can discuss with that. We are giving you free guidance for notes preparation, which will be useful for you for passing your first to final BDS exam. Afterwards, if you find that it is somewhat difficult for you to pass, we can go with explanation in easy language also. So please tell me if you are having any doubt. At present, what we have studied, we will be discussing first. We have studied leukoplakia and lichen planus. You have to write in a different manner. Okay, both of you like definition, etiology, clinical features. If you know all the key points, you will be able to write more things. Today we will not waste your time. Today's topic is about leukoedema. It's a white lesion. Sometimes they may ask you for 5 marks. What is it? Definition. It's an abnormality of buccal mucosa. Okay, it's leukoedema. It's an abnormality of buccal mucosa. There will be some edema-like formation in the buccal mucosa. Etiology, as I explained, all etiology will be repeating. But in case of lichen planus, that is autoimmune disorder. So you will tell that all these factors lead to some problem in the immunity, and due to the autoimmune problem, there will be problems like Wickham's tria. There will be 5 types: reticular, erosive, plaque, atrophic, and bullous. I told you to remember like this way: reticular, erosive, plaque or hypertrophic, atrophic, and bullous. Wrap up or rehab. Okay. In case of lichen planus. Now, site of leukoedema, obviously buccal mucosa, labial mucosa, floor of the mouth. Shape. So now, as we go through all these white lesions, you will understand that these lesions have common theme. Okay, definition, etiology, shape, feature. You will write that white patch will be there on the buccal mucosa. Okay, sometimes they become grayish or they also have some corrugated surface. Opalescence mucosa will be there. Okay, rays. They are found more in blacks than in whites. Now histopathology. Okay, the same thing what we have studied. Acanthosis, parakeratosis. Then cells will be having problem. In which layer? Stratum spinosum. Okay, they will be containing glycogen. So this thing only is somewhat different. You should remember this. Various disorders have different involvement of different cell layers. Basal cell layer is somewhat different. In case of leukoplakia, we have superficial cell layers. Rete ridges are broad and enlarged. Now, in case if you forget to write this histopathology, so we have studied in leukoplakia, 4 main features will be there: thickness of epithelium, white, this rete ridges, and acanthosis, cellular layers will be different, keratinization will be different. All these things you can write. Now, if you try to speak without looking into book or just recall it like this way, 4 points, then you will be able to remember what to write. Okay. Now diagnosis. This patch will not be rubbed off. Okay, white patch will not be rubbed off. So it means that either it will be leukoplakia or leukoedema. If it is rubbed off, then we can tell that it might be some candidiasis or some other disorder, because in leukoplakia or lichen planus, this lesion is not rubbed off. Okay, this way you have to differentiate.
Now with stretching of buccal mucosa, opaque changes will dissipate. In case of leukoedema, if you stretch the buccal mucosa, these opalations will be gone. Differential diagnosis: leukoplakia, white sponge nevus. Sometimes patient is having chronic cheek biting. In this case, you will find that there is white patches, so which will be similar to leukoedema. Treatment: no treatment is necessary, but in your exam, instead of writing this, you can write many things: removal of etiology, multivitamins, then antioxidants, intralesional steroids in severe cases. Okay, all these things you can write. Mucosal burns, second topic. Okay, sometimes patient is having tablets or some chemicals or some restorations. In this case, there will be burn or burning tissue of oral mucosa. Okay, here they are telling that aspirin is a chemical which on application of topically it can lead to some painful. Okay, so thermal burns. In case of chemical burns, they have just mentioned one drug, aspirin. Other restorations, other things also will be leading to burns. In case of thermal burns, sometimes due to consumption of hot or spicy food, okay, we can have these thermal burns. It is a short note only. Now we will discuss pre-malignant lesions. Okay, pre-malignant lesions. What are those? So, what is pre-malignant lesion? So, first of all, think that it is normal mucosa. This one. Now, chances of this to cancer is 0. Now, apart from normal mucosa, some changes will be there in the mucosa, which will lead to some more chances of cancer. Here there are 0 chances. Okay, here there will be more chances. So this will be called pre-malignant lesion. Okay, और pre-malignant condition क्या है? बॉडी की कंडीशन ऐसी है, पेशेंट की कोई हैबिट है, बॉडी का कोई सिंड्रोम है ऐसे कोई, तो इससे क्या होता है, वो कैंसरस होने में उसका फेवरेबिलिटी ज्यादा है, कैंसर वो हो सकता है. So which are the pre-malignant lesions? Leukoplakia, erythroplakia, sublingual keratosis, Candidal, stomatitis, Nicotine. Now pre-malignant condition. It is a condition, okay, it is a situation of patient where the tissue is not affected, matlab, tissue will be affected but appearance will not be changed sometimes. So what will happen? Patient will not know this thing. Only he will have some symptoms which can be solved by medication. For example, patient is having tobacco or betel nut. Betel nut contains ericolin. In this ericolin, it will lead to fibrosis of the buccal mucosa. Patient will not be aware. There will be no clinical appearance of this problem until patient will have reduction in mouth opening. When the mouth opening starts limiting or restricted, patient will come to the clinic, and at this time on palpation, doctor will tell to the patient that there is oral submucous fibrosis. So it is a condition where many factors are associated and they are having greater risk than other tissue of developing into cancer. It is called pre-malignant condition. Oral submucous fibrosis, Patterson-Kelly syndrome, lichen planus, discoid lupus, erythematous. Okay. Now, what we have studied till now, leukoplakia. It's just revision only. If you have done, it's very good. If you have not done, this will be a revision. Definition is white patch or plaque that cannot be compared to other lesions. Okay, and that cannot be removed. Two things are there. Cannot be compared and that cannot be removed. Etiology. As I mentioned, tobacco, alcohol, immunity, malnutrition, many things you can write, bacterial, viral, fungal, all things you can write. It's upon you how to
elaborate your paper. Now age, for 4th to 6th decade, males are more affected. Side, tongue, floor of the mouth, buccal mucosa. Shapes, okay, there are 4 types: homogeneous, ulcerative, nodular, and speckled. 4 types are there, but they have given many types. If you are planning to remember this, it is fine. Thin, homogeneous, nodular, verrucous, erythroleukoplakia, or speckled leukoplakia. Now leukoplakia's features, you can see white patch here. This patch will not be removed on scraping. If it is removed, there might be some other problems. Now proliferative verrucous leukoplakia. You can see that snow type or white type material is here. This is proliferative verrucous leukoplakia. Speckled leukoplakia, we can see that white patches, plaque will be there. Histopathology, we already discussed 4 things. First is difference in keratin. Second is acanthosis or spinous layer. Third thing is cellular layer. Okay. Fourth is epithelium. We have discussed. In epithelium, we will find epithelial dysplasia. Okay. So I told you that what is epithelial dysplasia. When normal epithelium has some changes in the cellular pattern, its composition, its morphology, and its tendency to go towards becoming a cancer cell or cancer epithelium, this property is called dysplasia. In dysplasia, we have drop-shaped epithelial ridges, basal layer hyperplasia, loss of basal cell polarity, loss of normal stratification. All these things we have discussed in the previous lectures. You can go through the previous lecture and understand if you are having any difficulty. But these 10 factors you can remember. You can remember 5 to 6. All these are important because you should know what is the features, what are the features of dysplasia in which cells are involved. These are the histopathological diagrams of epithelial dysplasia. They are classified into 3: mild, if it is limited to basal and parabasal. If it is involved in all the layer, it is severe, and in moderate, only up to spinous layer. We have discussed. What is carcinoma in situ? If epithelial dysplasia is involved in all the 4 layers, from here to here, it is called carcinoma in situ. Okay, also called intraepithelial carcinoma. Differential diagnosis: frictional keratosis, galvanic keratosis. Others are also differential diagnosis are there. Treatment: as you see, first of all, you have to identify the etiologic factor. Which is the etiology? What is the causative factor? Then, suppose no dysplastic changes are found, you have to go with only follow-up and proper nutrition supplements, vitamins, etc. If you want to go with removal of dysplastic changes, you have to remove that tissue, involved tissue. How? Surgically, cryosurgically, and electrodesiccation. In case of extensive lesions, grafting is needed. Why grafting is needed? Because if the lesion is extensive and you have removed the mucosa or any soft tissue or oral mucosa, you require grafting from pellet or other sources. Now, Candida leukoplakia. In Candidiasis also we have studied this. In leukoplakia we have discussed this. Okay. So when such questions will be asked, you can write any of the things. Candidiasis as well as leukoplakia. Now histopathology. Mitotic activity is 4 times more. Okay. By far,
candidal organisms will be there, and the most common repeated sentence, chronic inflammatory cell infiltrate. Treatment, antifungal therapy will be useful. Why? Because candidal organisms are involved. Now, nicotinic stomatitis. Okay, sometimes short note can be asked, what is this? Due to smoking, there you can see that there will be white patch or leukoplakic lesion of the palate. Etiology, as I mentioned, smoking, hot foods, reverse smoking, etc. As you can see on the picture, there will be white patches or plaque. In age, generally more than 45 years. Age, gender, male is greater than female. Site, only palatal mucosa. No buccal mucosa is there. Nicotinous stomatitis is only on the palatal mucosa. Shape, we can see that erythematous patches will be there on the palate. Increase in keratinization will be there. Opacification will be there. Red dots will be seen in the white patches. Okay, this suggests that this is Nicotina stomatitis. Histopathology. What you will be doing? Epithelial hyperplasia, acanthosis, hyperkeratosis, all similar to that of leukoplakia or any other white lesions. Only few will be different. The salivary gland will be having inflammation. Squamous metaplasia will be there in the excretory ducts. Treatment, removal of etiology or stop smoking, and it is a completely reversible habit. When the patient stops smoking, this will return to its original position. Next question, erythroplakia. Okay, till now if you are having any doubt, you can tell us. We will discuss or we will explain you any topic if you want to repeat it again. Now in case of erythroplakia, the term, in case of leuko, we had white patch, here there is red patch. Okay, remember this. Erythro means red. Etiology, same, tobacco, alcohol. Then clinically, 50 to 70 years, male is greater than female. Site, floor of the mouth, retromolar area, tongue, soft palate. Shape, sometimes we can see that there is homogeneous patch. Only red patch will be there like this, homogeneous. We can find that speckled. There will be white area. In this, there will be red area. So this is speckled. Histopathology. So dysplasia will be there. Sometimes squamous cell carcinoma will be there, and sometimes carcinoma in situ will be there. Okay. So we have already discussed all these features: dysplasia, squamous cell carcinoma features, and carcinoma in situ features. Differential diagnosis. All differential diagnosis similar to that of leukoplakia or lichen planus. Okay, psoriasis. Some you may add, some you may remove. Treatment. You have to examine properly. Removal of etiology. Biopsy is necessary. Surgical excision is necessary. Post-operative histopathological examination is necessary. After removing the lesion, you have to check the histopathology to confirm that it is not a cancerous tissue. If it is a cancerous tissue, you have to refer to the oncologist. Till now, our pre-malignant lesions are over. Now we will discuss pre-malignant conditions. Most important, oral submucous fibrosis. This will be asked in 7 marks. Sometimes in exam they do only OSF, SMF. They will write in short. So all are the short names. What is this? It is a chronic disease, progressive, scarring,
high precancerous condition of oral mucosa leading to restricted mouth opening. So you have to write the definition in this way. Both the things you have to write. Mouth opening will be restricted. Now etiology. Here tobacco is not a factor. Here erica nut and betel nut. So what you write in the white lesions will not be the same here. Here mainly erica nut and betel nut is there. Nutritional deficiency. Okay, as I mentioned in the previous lectures, predisposing factors. कैसे फैक्टर है कि वो हर एक ह्यूमन में या हर एक पेशेंट में नहीं होता है. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर किसको बोलते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, एड्स का डिसीज है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो ठीक से साफ नहीं कर सकता अपनी ओरल कैविटी, तब जाके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आता है और तब जाके कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एंटीजन हो, वो एक्टिव हो जाता है और वो अपना पोटेंशियल दिखा देता है. तीसरा etiology है हाइपर सेंसिटिविटी टू वेरियस डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, कभी कभार पेशेंट स्पाइसी फूड खाएगा तो उसके हिसाब से वो एलर्जिक होगा टिश्यू, या मतलब हाइपर सेंसिटिविटी. क्लिनिकली वो रेयर है. कौन से रेस में इन्वॉल्व है? नॉर्थ अमेरिका और पाकिस्तानीज. तो आप एशियन रेस भी लिख सकते हो. इंडिया में बहुत सारी है. एज 20 to 40 ईयर्स. ठीक है, जो टोबैको खाते हैं जो ग्रुप में उसमें ज्यादा होता है. साइट तो बक्कल म्यूकोसा, रेट्रोमोलर एरिया, सॉफ्ट पैलेट और कभी कभार वो फेरिंग्स और इसोफेगस में भी एक्सटेंड होता है. अब शेप वाइट येलोइश लाइन हो जाएगी बक्कल म्यूकोसा पर. ठीक है, फिर म्यूकोसा होगा वो अपना रेजिलियंस खो देगा, इलास्टिसिटी खो देगा और क्या होगा, लेमिना प्रोप्रिया से जो प्रोसेस होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर से एपिथेलियम से, वो मस्कुलेचर के अंदर वो प्रोसेस में आ जाएगा. तो आपको खाली ये याद रखना है कि वाइट येलोइश लीजन आएगा, म्यूकोसा इलास्टिसिटी लॉस कर देगा, म्यूकोसा रिजिड हो जाएगा और पाल्पेट पे वो थिक फाइबर जैसा लगेगा. हिस्टोपैथोलॉजी तो हाइपर केराटिस हो जाएगी. फिर डिस्प्लेसिया भी दिखेगा आपको. फिर लेमिना प्रोप्रिया में चेंज आएगा, वास्कुलरिस्ट हो जाएगा और हाइलेनाइस्ट हो जाएगा. फिर सबम्यूकोसल डिपोजिशन ऑफ, आप ये भी बोल सकते हो कि वास्कुलर कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू भी आ सकती है. क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट कॉमन है. ठीक है, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस. क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो रेडिएटिंग है. ठीक है, कौन सा? सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन स्क्लेरोडर्मा भी आएगा. ठीक है, कभी कभार ट्रिस्मस भी आता है. ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर जो मुंह को बंद कर देगा, मुंह की ओपनिंग को लिमिट कर देगा, वो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है. अब ट्रीटमेंट, हैबिट को स्टॉप कीजिए, एक्सरसाइज दीजिए, पेशेंट को बोलिए कि बार बार आप मुंह खोलने की एक्सरसाइज करिए. स्टीरॉइड्स का और भी मिक्सचर होता है. ठीक है, उसका इंजेक्शन देना होता है. प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भी हम इंजेक्शन दे सकते हैं. और अगर आपने ये फाइब्रस बैंड वाला पोर्शन है पहले बक्कल म्यूकोसा का वो निकाल दिया तो आपको फिर ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, तो आप ग्राफ्ट भी कर सकते हो. ठीक है, अब पैटरसन केली सिंड्रोम. ठीक है, इसका नाम है प्लमर विंसन सिंड्रोम. ये वन लाइनर में भी आ सकता है और 5 मार्क में भी आ सकता है. क्या क्या है? तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में 3 चीजें. एक तो ग्लोसाइटिस है, टंग के ऊपर इन्फ्लेमेशन. एक डिस्पेजिया है, खाने में दिक्कत है. ठीक है, पहले टंग के बारे में बताया, फिर गले के बारे में बताया कि खाने में दिक्कत है. डिस्पेजिया इज डिफिकल्टी डिग्लूटिशन, खाने में दिक्कत. ठीक है, ठीक से वो
च्यूइंग नहीं कर सकता पेशेंट। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो 3 चीज है, डिस्पेजिया, ग्लोसाइटिस और एनीमिया। ठीक है। इटियोलॉजी, कैंडिडियल ऑर्गेनिजम्स आएगा, स्टेफिलोकोकस आएगा, जेरोस्टोमिया आएगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आएगी, एनीमियास, मैकेनिकल ट्रॉमा, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज। अब क्लिनिकल फीचर्स, तो एज ग्रुप में 40 to 50 है, जेंडर में फीमेल्स ज्यादा है, साइट तो सॉफ्ट पैलेट में होता है और बक्कल म्यूकोसा में। सिम्टम्स क्या क्या है, तो पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, ऑल्टर्ड टेस्ट है और जेरोस्टोमिया है। ठीक है। तो ये तो सिम्टम्स आपको कैसे पता चल जाएगा। टंग में दिक्कत है तो टंग क्या क्या काम करती है, सलाइवा आते हैं, ओरल हाइजीन में हेल्प करता है, टेस्ट में हेल्प करता है, खाने में हेल्प करता है, तो सारी चीज आप बोल सकते हो। फिर गले में दिक्कत है, डिस्पेचिया, ठीक है, पेन वाइल डिग्लूटेशन और पेन वाइल चूइंग डिफिकल्टी प्रॉब्लम दिस। तो उसमें क्या होगा आपको पता ही है कि बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन होगा, तो यू कैन कोरिलेट दिस थिंग्स विद द इन्वॉल्व पार्ट। और शेप क्या होगा, तो लेमन टिंटेड पैलर होगा स्किन का, एंगुलर चिलोसिस, ठीक है, जब लिप्स होंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पर रेडिश हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंगुलर चिलाइटिस। टंग पेनफुल हो जाएगी, कोइलॉन किया, नेल्स थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ठीक है, नेल्स होते हैं ना उंगली के, वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। हिस्टोपैथोलॉजी, वही का वही आपको लिखना है, एट्रोपी एपिथेलियम की, रेटिव प्रोसेस एब्सेंस हो जाएंगे, लेमिना प्रोप्रिया हाइलिनाइजेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स नैरोइंग हो जाएगा। तो कभी कभार क्या है, आपको ये सोचना है कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं। तो जहां भी आपको ये आता है हिस्टोपैथोलॉजी, तो जो भी अलग है ना, जैसे कि व्हाइट ल्यूकोप्लाकिया और लाइकन प्लेनस में क्या अलग होगा, तो लाइकन प्लेनस में क्या होगा अलग, बिकेम स्ट्राया आएगा, रेटे रिचेस थोड़ी अलग हो जाएगी, फिर वो स्काईवेट बॉडीज होगी, इयोसिनोफिलिक बॉडीज होगी। तो जो अलग है वही आपको लाइकन प्लेनस में लिखना है, कॉमन है वो तो यहाँ पे आप आगे लिख दिया। तो ऐसे करके आपको सोचना है कि ये अलग क्या है हिस्टोपैथोलॉजी में, और सारी हिस्टोपैथोलॉजी में आता है नहीं आता है डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है, एक पेज पूरा भर देना है हिस्टोपैथोलॉजी का। ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन दे दो, कॉज को निकालो, आइडेंटिफाई करो, निकालो, और हाई प्रोटीन डाइट दे दो। ठीक है। तो ये वाइट लीजन्स जो थे, जो इम्पोर्टेंट है, वो सब पूरे हुए। एक खाली पेम्फिगस बाकी है, वो वेसिकुलर में आएगा। तो ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लैनस, वो सब इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से आपको एक बार इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम पास होने में दिक्कत ना हो। ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तब आपको पता ही नहीं होगा क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है। पहले तो आएगा ल्यूकोप्लाकिया, फिर आएगा लाइकन प्लैनस, ओएसएमएफ, ये चार में से एक या दो आएंगे। ठीक है। तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी। ठीक है। तो ये आपको आइडिया आ गया, चार में से एक करना है। फिर हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, कैंडिडियासिस, वो दो में से एक आएगा। ठीक है। कभी कभार सिफिलिस या टीबी का जो ओरल मैनिफेस्टेशन होता है वो भी पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वायरल वाला डिसऑर्डर, ये फंगल वाला और ये बैक्टीरियल वाला आपको समझाना है, इसमें से कोई एक आएगा। ठीक है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, कैंडिडियासिस, ट्यूबरकुलोसिस और
सिफिलिस। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। फिर आप आगे आगे जाओगे तो जो पल्प वाले डिसऑर्डर्स है, डिसीज ऑफ पल्प और पेरीरेडिकुलर टिश्यूज, उसमें से पायजेनिक ग्रेनुलोमा है, फिर ऑस्टियोमाइलिटिस है, फिर पल्प पॉलिप है। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन यही पूछते हैं, पल्पल हाइपरेमिया। तो ये किसका नाम है? ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस का फीचर है। ठीक है, कभी कभार शॉर्ट नोट में नोमा भी आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। फिर आता है आपको जो डिसऑर्डर से कॉमन वाले, एब्रेजन है, एट्रीजन है, इरोजन है, एफ्रैक्शन है। इसमें से एक शॉर्ट नोट आएगा। ठीक है, तो ये आधा कोर्स हुआ, मतलब 90%। आगे आगे आपको क्या करना है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया आएगा, और पेजेट या चेरुबिज्म, बोन वाला डिसऑर्डर। ठीक है, फिर नर्वस में क्या आएगा, न्यूरोफाइब्रोमा आएगा। ठीक है, फिर कैंसर में क्या आएगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, वो भी आपका कोर्स होगा। तो अभी हमारा आधा कोर्स तो पूरा हो चुका है। ठीक है, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस तो यहाँ लिखा ही नहीं है, वो तो हमने कर दिया है। डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस, उसमें से भी एक या दो शॉर्ट नोट आएंगे। ठीक है, तो ये कोर्स आपको ध्यान से करना है, क्वेश्चंस को सारे सारे अटेम्प्ट करना है, देखना है क्या आपको कैसे वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफी है गाइस। हम आगे के जो चैप्टर रहेंगे उसमें हम करेंगे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन इजी टॉपिक है। आपको ये टॉपिक हम कल करवाएंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में तो आप हमको बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने आज जो पढ़ाया वो वाइट लीजन्स के बारे में पढ़ाया है। आपको क्या करना है, हमारे सारे वीडियोस देखना है। अगर आप भूल जाते हो तो उसमें से आप देखकर नोट बना सकते हो। और आपको ऐसा भी लगता है कि सर फिर से कोई टॉपिक समझाए तो हम समझा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम आप देख रहे हो स्क्रीन पर, www.medicaldentalacademy.com है। यूट्यूब पर आप चैनल सर्च कर सकते हो @मेडिकल डेंटल एकेडमी। सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। थर्ड ईयर बीडीएस के फाइनल ईयर, फर्स्ट और सेकेंड बीडीएस भी हम सून सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब our channel. If you like our content, please share to your colleagues and please share to maximum students so that we will be promoted by this act. In case if you are not going with this bell icon, if you have not pressed this bell icon, please press the bell icon for further notifications at the earliest. So it's enough for today, guys. Have a nice time. Bye bye.